Hello children, welcome again to your maths class with Poonam Bagga. We are studying chapter 6 triangles from class 10th maths. In our previous video, we discussed the basic proportionality theorem or the Thales theorem as it is also called. Also, we discussed the converse of basic proportionality theorem. Today, we will be doing the first two questions from exercise 6.2 based on these theorems. Before we start, let us once again quickly recall the two theorems. Here we have basic proportionality theorem, which says that if in a triangle ABC a line DE is parallel to BC, then we have the ratio AD upon DB equal to AE upon EC. The ratio of these parts AD upon DB is equal to AE upon EC. यहाँ पे साइड AB के जो दो पार्ट्स हैं AD और DB, इनका रेशो इक्वल होगा साइड AC के जो दो पार्ट्स हो रहे हैं AE और EC, जहाँ पर DE एक ऐसी लाइन है जो AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स D और E पर इंटरसेक्ट कर रही है और साथ ही साथ साइड BC के पैरेलल है. दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ऑल्सो वी हैव अ फ्यू मोर रिजल्ट्स as they follow with this theorem. We call them as corollary, which says that in such a case we also have the ratios AD upon AB equal to AE upon AC. यहाँ पर हम ये एक पार्ट ले रहे हैं AD and then the complete length AB. इसी तरह से यहाँ पर AE और complete length AC, इनका जो रेशो है वो मिल जाएगा हमें इक्वल. Similarly we can take the ratio of the parts. Here DB is to this one complete length AB and EC is to the complete length AC. ये रेशो भी इक्वल होंगे. Then we also have its converse, which says that if in a triangle ABC a line intersects AB and AC in points D and E such that AD upon DB is equal to AE upon EC. अगर हमें पहले से ही ये रेशो इक्वल दिए हैं, then we can come on to the result that DE is parallel to BC. अगर हमें ये पार्ट्स का रेशो इक्वल दिया है AD और DB, ये पहले से ही हमें रेशो दोनों इक्वल दिए हैं AD अपॉन DB और यहाँ से AE अपॉन EC. ये रेशो अगर इक्वल है तब हम कह सकते हैं कि ये DE लेंथ जो है पैरेलल है BC के. और ऐसा केस जब हमें दो साइड्स को पैरेलल प्रूव करना हो और ये रेशो इक्वल दिए हों और ये दो लाइंस कह लीजिए पैरेलल प्रूव करनी हो, तब हम इसका कन्वर्स यूज़ करेंगे, कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. Now on the basis of all this, we will be starting exercise 6.2 question 1. Here we have in figure first and second DE is parallel to BC. It has been given कि DE और BC parallel हैं. ये figures हैं आपके पास. Find EC in first figure and AD in the second. Here we have to find this EC. This is unknown and in the second case we have to find AD. This is unknown. और क्या दिया है? DE parallel है BC के. In both these cases DE is parallel to BC. अब जब भी हमें एक ट्रायंगल दिया हो और इस तरह से बीच में एक लाइन सेगमेंट पैरेलल है एक साइड के ट्रायंगल की, तब हम अप्लाई करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम and with the help of it we will be getting these unknowns. Let us first take the first part, this one here. We start the solution. What has been given? In triangle ABC, DE is parallel to BC. अब जैसे ही ट्राइंगल में DE पैरेलल है BC के, हम क्या अप्लाई करेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. फ्रॉम द वर्टेक्स A we will be taking two parts, AD upon DB equal to, from here we will take AE upon EC. I hope you have got very much familiar with it, and you can also pause the video once and try to do these questions once on your own, and then you can always verify from here. Here we see the length AD, it is 1.5 centimeters and DB it is 3 centimeters. This is equal to AE which is 1 centimeter long, and then we have to find this EC, so we write it as EC. Now how to find this EC? Just cross multiply. You will get 1.5 EC equal to 3 into 1 will be 3. From here EC is equal to 3 upon 1.5. इस डेसिमल को रिमूव करके ऊपर एक 0 लग जाएगा. We will get 30 upon 15 and this is equal to 2.
So this implies that EC is equal to 2 centimeters long, which we were asked. We have found the value 2 centimeter. Getting it? Next we can also take the second part. I hope this is clear. Next we take second part. Here we have to find this missing AD. इसको find out करना है, ठीक है? Again we begin the solution. What do we see? In triangle ABC, DE is parallel to BC. जैसे ही ट्राइंगल में हम इस तरह की साइड देखें DE पैरेलल है BC के, तो हम क्या करेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे. दिस इम्प्लाइज AD अपॉन DB is equal to AE upon EC. Very easy questions these are. Now AD we have to find. We can write it as AD itself. DB की जगह हम रखेंगे 7.2. Then AE it is 1.8 centimeters long. तो यहाँ आ गया 1.8. EC के लिए लिखेंगे हम 5.4. From here we need to find AD. तो 7.2 को हम RHS में ले जाएंगे. This will be multiplied then 1.8 upon 5.4 into 7.2. Now we have one single digit after the decimal both in numerator and denominator. तो decimal से decimal हम cancel कर सकते हैं. We will get it as 18 upon 54 into 7.2. You will cancel it by 18. It will go 3 times. 18 3s are 54. And then on dividing 7.2 by 3, 3 2s are 6. Then 3 4s are 12. So it will be 2.4. And this gives us AD equal to 2.4 centimeters. Okay, next we take question 2. E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR or not. Here we have been given some measurements PE, EQ, PF, then FR. तो यहाँ इस क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी ड्रॉइंग इट्स फिगर. क्या दिया है देखिए, ट्राइंगल PQR दिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ ट्राइंगल. दिस बी ट्राइंगल PQR. इसके बाद हमें क्या दिया है, E and F are points on sides PQ and PR. Now we have to take 2 points on PQ and PR. We take them here. Let this be point E and this be point F. E and F. Now what we have to see? We have to state whether EF is parallel to QR or not. तो पहले हम EF को join कर लेते हैं और देखते हैं कि ये parallel है कि नहीं है QR के. So here we have joined E and F. क्वेश्चन क्लियर है, एक ट्राइंगल दिया है और फिर PQ और PR पर 2 पॉइंट्स E और F दिए हैं और हमें ये पता करना है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं. तो अब जब भी हमें पैरेलल का केस डील करना है कि पैरेलल है या नहीं, वहाँ हम अप्लाई करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. यहाँ पर हम इन पार्ट्स का रेशो लेंगे PE अपॉन EQ. इन दोनों पार्ट्स का हम रेशो लेंगे. फिर हम अलग से रेशो लेंगे PF अपॉन FR. इन पार्ट्स का रेशो लेंगे, दिस वन एंड दिस वन. अगर ये दोनों साइड के रेशोज इक्वल आते हैं तब तो हम कह सकेंगे कि EF पैरेलल है QR के बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. और अगर ये रेशोज इक्वल नहीं आते हैं तब ये दोनों EF और QR पैरेलल नहीं है. Getting it? So we will be taking all these 3 cases one by one. The first one is here and this is the figure related to this one. Here we have been given PE equal to 3.9 centimeter. यहाँ मार्क कर लेते हैं जिससे easily हम कनेक्ट कर पाएँ. PE is 3.9 centimeters. Then EQ is 3 centimeter. EQ, this is 3 centimeters long. Then PF is 3.6 centimeter long. And then FR is 2.4 centimeters long. ठीक है. Now first here we will find the ratio of these two parts PE upon EQ. Here PE upon EQ. This is equal to, you can see, 3.9 upon 3. This can be written as 39 upon 30. Divide by 3. It will go 13 times and then 13 by 10. ये हो गया simplest form. Now we find the ratio PF upon FR.
This is equal to PF is 3.6 and this one is 2.4. Remove the decimals as we have the same number of digits after the decimal. तो हम यहाँ पर decimal आसानी से remove करते हुए we will get 36/24. You can divide both these numbers by 6. 6 6 and then 6 4s. Again if we divide by 2, 3/2. Now we see that the two ratios are not equal. Here this implies that PE upon EQ, this is not equal to PF upon FR. और अब क्योंकि ये ratios equal नहीं है, इसका क्या result मिल रहा है हमें? That EF is not parallel to QR. हमसे यही पूछा था, बताइए कि EF पैरेलल है कि नहीं QR के. तो अब क्योंकि ये रेशो इक्वल नहीं आ रहा है तो ये दोनों पैरेलल नहीं है बाय द कन्वर्स ऑफ BPT. Getting it? We take the second part now. Part 2. Here we have been given PE equal to 4, QE equal to 4.5. Then we have these measurements. Let us name this again as PQR. And then we have here E and F. PE is 4 centimeters. Then we have been given QE equal to 4.5 centimeter. Then we have PF 8 centimeters and then RF is 9 centimeters RF. Now again first of all we will find the ratio PE upon EQ. We begin the solution. Here the ratio PE upon EQ, this is equal to 4 upon 4.5. This will be equal to 40 upon 45. ये decimal remove करके ऊपर हमने एक 0 लिख दिया है and then we will be having here on dividing by 5. 5 8s and 5 9s. So 8/9 is this ratio. Now we will find the ratio PF upon FR. Now PF upon FR. PF measures 8 centimeter and FR measures 9 centimeter and this is again ratio 8/9. And so here we see that the two ratios are coming equal and this implies that PE upon EQ is equal to PF upon FR. And now can you say whether EF is parallel to QR or not? Yes, since this ratio is coming out equal, we can say that EF is parallel to QR by converse of BPT. यही हमको चेक करना था कि ये पैरेलल है या नहीं और इसके लिए हमने दोनों तरफ इन साइड्स के जो पार्ट्स हैं उनका रेशो लिया. यहाँ पर PQ के जो पार्ट्स हैं PE और EQ उनका रेशो लिया, वो हमें मिल रहा है 8/9 और यहाँ पर आप देखेंगे PR के जो दो पार्ट्स बन रहे हैं PF और FR इनका रेशो लिया, ये भी 8/9 आ रहा है. सिंस द टू रेशियोज आर इक्वल वी कैन से दैट EF इज पैरेलल टू QR बाय द कन्वर्स ऑफ BPT. Next we have part 3 from the same question. Here again we have triangle PQR and we have been given points E and F and here PQ is measuring 1.28 centimeter. PQ ये तो full length है, यहाँ से लेकर पूरा Q तक. This is measuring 1.28 centimeters and then we have PR 2.56 centimeters. P से लेकर यहाँ R तक ये टोटल लेंथ आपको दी है 2.56 centimeters. Then we have PE 0.18, this one 0.18 centimeters and then we have PF, here we have PF 0.36 centimeters long. And now we have to check whether EF is parallel to QR or not. Now we find the ratio PE upon EQ. यही find out करते हैं हम by BPT, but here we don't know the length EQ. We can find it by subtracting this length PE from PQ. PQ से PE minus करने से आपको ये length मिल जाएगी EQ. We write here PQ, this is 1.28 centimeter और PQ को अगर हम split करें we can write it as PE plus EQ. देखिए आप PQ को हम PE plus EQ के फॉर्म में लिख सकते हैं. This is 1.28.
Now PE, this is measuring 0.18. So 0.18 plus EQ, this is equal to 1.28, and from here we can get EQ equal to 1.28 minus 0.18 centimeters. On subtracting, you will get it 1.10 centimeters. This is the length EQ. तो यहाँ पर हमें ये मिल गया 1.10 सेंटीमीटर्स. अब इसी तरह से हम ये FR लेंथ निकाल सकते हैं. ऑल्सो वी सी दैट PR, this is equal to 2.56 centimeters, and PR can be splitted as PF plus FR. PF plus FR. This is equal to 2.56. Now we see that PF is 0.36 centimeters long and plus FR, this is equal to 2.56. From here we can write FR equal to 2.56 minus 0.36, and this is equal to 0 and then 2 and then 2.20 centimeters. This is 2.20 centimeters. Now we can easily take the ratio PE upon EQ and PF upon FR. We take the next page. Now PE upon EQ. You will see that PE is 0.18 and this is 1.10. So 0.18 and 1.10. We have two digits after the decimal in numerator as well as in denominator. We can remove this decimal and we will have 18 upon 110. We can divide by 2. 2 nines are, then 2 fives are, again 5s are. 9 by 55 is the ratio. Next we take P here, F and then FR. PF upon FR. PF, this is 0.36 and then this is 2.20. So 0.36 upon 2.20. Again this will be equal to 36 upon 220. On dividing by 4 we get it as 4 9s are 36, 4 5s are 20, again 5 times 20, and again we are getting 9 upon 55. So what we see here, PE upon EQ is equal to PF upon FR, and this implies that yes, EF is parallel to QR. देखिए आप यहाँ पर ये रेशो इक्वल है PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, और क्योंकि ये रेशो इक्वल है हम कह सकते हैं कि ये EF पैरेलल है QR के, जो हमारा क्वेश्चन था. Here we can mention by the converse of basic proportionality theorem. Again you see, as we have been given the full length, complete length, we could have also taken the ratio PE upon PQ and PF upon PR. हम उस रेशो से भी ये चेक कर सकते थे कि EF और QR पैरेलल है या नहीं. अगर वो रेशोज इक्वल आते तो हम डिसाइड कर सकते थे कि ये पैरेलल है, और इक्वल नहीं आएंगे तो पैरेलल नहीं है. You could have taken it in that way also. Now with this we complete exercise 6.2 question 1 and 2 only. In our next video we will take up some more questions from the same exercise. Till then practice these questions. Okay then, goodbye for now.